Weighted average cost of capital part 2, and this is our 189th module of financial management. From here we are taking forward our discussion of weighted average cost of capital that we had in the last module. We discussed the formula of weighted average cost of capital, where we saw that we multiply the amount of capital or the percentage of capital, which may be debt or equity, with the cost of that debt or equity, and then we add them up to get the overall weighted average cost of capital. We also have to consider the element of income tax, that is, the tax shield. If we are paying a certain amount of tax, so cost of debt actually gives us that tax savings. So we multiply the cost of debt with 1 minus tax rate, which reduces the overall cost of debt and hence the overall cost of capital of the company. Now let's have a look at this slide, this spreadsheet, where we have got the working or the calculation of weighted average cost of capital. Our capital of equity is common and preferred stocks, but our debt capital can be of different types. For example, as you can see that it is loans and it is bonds and it is lease, and it may be something else also, because debt can be of any type. There are many forms and there are various factors which are related to these debts that differentiate these types of debts. Suppose we have taken 3 types: loans, bonds, and lease, and these are of different amounts. So what we will do is that we will see that what is the amount of each component, and then we will consider the cost of capital. Now, in this case, we have 300,000 common stock, 200,000 preferred stock, 100, 150 and 50,000, the 3 components of debt, and then we have got their individual costs. यहाँ पर हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा मौखर कर रहे हैं, आगे चल के हम इसे करेंगे कि ये जो परसेंटेजेस 22, 18, 14% यहाँ लिखी हुई हैं, ये हमारे पास कहाँ से आई हैं, इनकी कैलकुलेशंस हम आगे चल के करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं that these costs are given to us. So if these costs are given to us and we have to calculate the weighted average, then this is the process that we follow. We'll multiply each component of capital. For example, number 1, we multiply the amount of common stocks with the percentage cost of the common stock, that is 22%, and then we'll get a certain amount. यानी 66,000 rupees हमें earn करने हैं in order to meet the requirement of common shareholders, यानी उनकी required rate of return को fulfill करने के लिए. Similarly, the preferred shares have got a cost of 18% and the amount of investment is 200,000. That leads to 36,000. So the company needs to earn 36,000 in order to satisfy the preferred shareholders. And likewise, 14, 17 and 19% are the costs of loans, bonds and lease, which will then be shown as 14, 25,500 and 9,500. Simply meaning that if these amounts are earned by the company, the cost of these capitals will be fulfilled and they will be satisfied from the company's profits or return. So what we'll do that, on one side we'll add up the total amount of capital, यानी इन मुख्तलिफ फॉर्म्स की टोटल वैल्यू क्या है जो कंपनी में इन्वेस्ट हुई है, एंड यू कैन सी दैट इट इज़ 800,000. यानी एक्विटी और डेट की तमाम सूरतें जो हमारे सामने हैं उसका टोटल 800,000 है, और इनके ऊपर जो रिटर्न हमें पे करना है टू द शेयर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, लीज होल्डर्स, comes out to be 151,000. ये परसेंटेज हम 151,000 को डिवाइड करें अगर 800,000 से तो डिटरमिन कर लेंगे. लेट्स हैव अ लुक एट इट
that how it is calculated. This is weighted average cost of capital. 151,000 is the weighted average cost in rupees और डॉलर्स, यानी ये अमाउंट है वेटेड एवरेज कॉस्ट की, परसेंटेज नहीं है. हमने परसेंटेज इंडिविजुअल लेकर उसकी अमाउंट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रुपीस या डॉलर्स की शक्ल में कैलकुलेट कर लिया. एंड देन वी डिवाइड दिस ओवरऑल कॉस्ट with the overall amount of capital, which is 800,000, and this comes out to be 18.875%. ये तो वो एलिमेंट है जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है, यानी जब आपको अमाउंट्स दी जाएं, फिगर्स दी जाएं, फॉर्मूला लगाने को, कैलकुलेट करने को कहा जाए तो ऐसे आप इसे कैलकुलेट करेंगे और ये रिजल्ट निकालेंगे. लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? How do you interpret this 18.875%? हम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों किसी बिजनेस को इतनी कॉस्ट अर्न करनी चाहिए अगर उसके पास ये डेटा ऑफ कैपिटल और कॉस्ट मौजूद है. इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल असल में किसी कंपनी के टारगेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या रिटर्न को डिटरमिन करता है कि कंपनी को कम से कम कितना प्रॉफिट अर्न करना है इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द फंड प्रोवाइडर्स, यानी कॉमन शेयर होल्डर्स, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, बॉन्ड लीज होल्डर्स, सबको सेटिस्फाई करने के लिए अगर ओवरऑल कैपिटल यानी 800,000 के ऊपर ऑन एवरेज कंपनी 18.875% प्रॉफिट अर्न करेगी तो तमाम फंड प्रोवाइडर्स को अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा. आखिर में एक बात जिसको हमें जहन में रखना चाहिए, दैट दिस इज नॉट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न और द प्रॉफिट दैट कंपनी शुड बी सीकिंग टू अर्न. दिस इज रादर द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न और द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस दैट द कंपनी शुड बी सीकिंग, बिकॉज एनीथिंग above that, anything more than that will increase the value of the firm. यानी अगर एक कंपनी 18.875 से ज़्यादा ये कंपनी अर्न करेगी प्रॉफिट, तो इसका मतलब है कि तमाम फंड प्रोवाइडर्स को उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न देने के बाद भी कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट बच जाएगा. और ये प्रॉफिट कहाँ इस्तेमाल होगा? दिस विल बी द रिटेन्ड प्रॉफिट. दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रॉफिट विच इज प्लोड बैक, जिसको आपने री इन्वेस्ट कर दिया कंपनी के अंदर, एंड दिस इज समथिंग विच विल ग्रो द कंपनी एट अ सर्टेन रेट इन द फ्यूचर. यानी इससे फिर कंपनी का साइज और कंपनी का ओवरऑल मैग्नीट्यूड फ्यूचर में बढ़ना शुरू हो जाएगा. ये वेटेड एवरेज कॉस्ट की कैलकुलेशन और ये वेटेड एवरेज कॉस्ट की सिग्निफिकेंस हमें जहन में रखनी है जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उस सब में ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक अहम किरदार अदा करती है.